Okay, so let's revise first what we have learned till now. So the very first thing, like we have been learning Lambda since 2 days, and today we will close Lambda, and tomorrow we will start OOPS, object-oriented programming. Uh, we will try to, if this gets over soon, so we will try to close the class early. Okay, so let's start with it. Okay, so first thing is that we have learned कि इसका इसको क्या कहते हैं lambda is a anonymous function. ठीक है, a function without name. इसको like the last time we learned how to define a function, right? So to define a function you need to give what a name to a function, right? But here you don't need to give a name for lambda, right? And that is why it is called as anonymous function. Anonymous means it does not have its name. Then it is defined as lambda keyword, and it does not need to have a return or yield, right? Similarly, which is there in the defining a function, but in the lambda you don't have a return or yield function, and it is called a shorthand function. Okay, shorthand means it is always a single liner function. Okay, single line में you can mm, basically write. Okay, so this is one of the simplest example. And in lambda you just only need to understand this one, like you just have to define it, then equals to, then you need to write lambda, then parameters equals to some expression. Okay, some expression. So if I take an example of this one, so here you defined a function, then added a parameters, and then returned some expression. Similarly, from this you can write like this. You just have to say lambda and semicolon or colon expression, and then you just have to call the function. Okay, you can either call like this, you can also call the same function like this. Here you have here you have defined a variable. Here you don't need to define a variable. You can add this inside a tuple and also query using a tuple. Okay, so here instead of square 10, you just said 9, and 9 ka square you got, right? Then another example we have seen, that is summation of a comma b, right? And what we have said, return a plus b, return a plus b, and this is how you query it. Okay. So yahi function, this similar function, we converted it into like this. जिसमें we said summation as a variable equals to lambda. Now these two variables goes here equals to this expression a plus b, which returns, and when we want to query we said summation 4 comma 5. Okay, summation 4 comma 4 comma 5, and we got the output as 9, like 4 plus 5 is the output. So this is the expression that worked. Okay, then similarly this is also addition, but we slightly changed the expression and added another parameter here also. It's the same, like इसको ही convert करके the same thing that we have converted, इसी को हमने कुछ इस तरीके से convert करा है. How we did it? First we said lambda, then these parameters are these. Okay, these parameters simply we just took here, and this expression we took here. Okay, and we just called a function, and similar answer that we have got. Look at the similar answer. Okay, so you can always convert this defining a function or a function into a lambda function. Okay, but provided that the formula or the code is a single liner. Okay, it should be a single liner, not really a long one. And if it is a long one, you need to convert that into a shorthand, like in a single line basically. Okay, then we have seen this another example.
that is add lambda. So यहाँ पर what we have given is what we have given. So initially what we did, we just gave c as a variable. So these are called as positional arguments. Okay, these are called as positional arguments. Whereas here you can see here there is a slight difference. First is a and b are same, so these are again positional arguments. But if you see this c is equals to 10, this is a default arguments. Okay, default argument. So default argument is something that you need not have to pass into the parameter, right? Into the argument. You this value will have its value. That's 10. So here in case a का value रहेगा 3, b का value रहेगा 4, right? और c का value 10 already है, right? And this is how like 3 plus 4 will be 7 into 10, that is 70. So this is how we got the output as 70. Okay. But we have also seen in the default parameters that if we pass a value for that default parameter, it overrides. Okay, overrides means initially a was 3, this is 4 and it was 10, but now it is 3. Okay. So अब यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन होगा, 3 plus 4 that is 7 into 3, that is 7 into 3 is 21. Okay, and that's the output you can see here. Then we have taken an example of statistics. Yes, statistics. तो statistics में क्या होगा, statistics dot mean a comma b comma c. So तीनों elements के तीनों variables के it will give us an mean, statistic mean. So तीनों variable का like this 2 3 10 का statistic mean 5 है, right? 2 3 10 का statistic mean 5 है. Similarly, we converted that into lambda function. ठीक है, lambda function. So lambda function में क्या करा हमने, so we took these three variables abc or consider these as abc. तो ये तीन abc हमने उठा लिए और यहाँ पर डाल दिए. ठीक है, and this is the entire expression that we have added here. ठीक है, and when we pass value of abc, we got like this expression worked and we got a value as 3. ठीक है, as 3. Then these are some examples that I have given to you. So yes, so there is a for loop also. So this is a for loop, right? For I in X. So this is X. So I will check each and every item and it will get return a square of each element. 2, 3, 4, 6 का square दे देगा. 4, 9, 16, 36. ठीक है. So whenever you are querying through a list, ठीक है, list के अंदर अगर if you will if you want to see what elements are there, right? So there is one way, you need to go for loop. ठीक है, so यही for loop, similar for loop we have written here. So lambda a as in this particular element that you are passing, ठीक है, a single element, single data type, that is a list, and this is a list comprehension. ठीक है, list comprehension क्या है, सबसे पहले we लिखते for I in a as in this list, find I square. Find I square. So this is how you can write this particular code like this. Okay, like this. Then going ahead, we also wrote this code like this. Okay, इसमें क्या करा हमने? We said for I in A, do I square and append कर दो उसको B में, append कर दो उसको B में. ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज इधर B में चली जाएगी. And the rest operation is same, like give this I will check each and every item and this will find a square और जो भी square आएगा हम B में append करेंगे. B का you can see when you ask value for B you will get all the squares. Yeah, you will get all the squares. Then this is similar, right? So we have seen some example like from list comprehension to normal
coding. So here what we write usually for I in A, so this will check each and every item. We say x इसका square कर दो और उसी x को print कर दो, ठीक है? We get these values. But you can also write like this for I in A, similar for I in A, find I square. Okay, this will also give us same value. This will also give us same value. So here this is done. So this also one of the example of components, like एक simple line code में कैसे convert करें. So here what we have seen, दो number लिए है, we have seen if A is greater than B, print this one, otherwise print this one. You can write this entire code into like this. Okay. What you have to see, if यहाँ पर you have to see if A is greater than B, print this, else this. यही है print. If A is greater than B, print this, else this. If A is greater than B, print this, else this. ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट है. सो ये इसका पोजीशन हो गया 1, ठीक है, यहाँ पर. देन इसका पोजीशन हो गया 2, इसका पोजीशन एल्स का हो गया 3, एंड इसका पोजीशन हो गया 4. तो 3 2 3 2 1 3 4, ठीक है, 2 1 3. So this is how you can write like this. Okay. This entire code will become, this entire code would can be changed like this. Can be changed like this. Then this also we have changed. So this is again same, but like this, instead of this if and else, we just added that into a function. Like def get a greater number, and then we have just added the same code here, and we queried. Similarly, we just converted that into a lambda. So lambda में कैसे करते हैं? You just write lambda, then pass the parameters, then you say that the same line जो हमने अभी देखी थी, okay, and then you just call it. You get the answer, and then this was the homework. So we have also seen one thing. So if you define a function, okay, this is a function which give us a multiplication of two numbers. You can use that same function, ये entire function you can use inside a lambda, or you can use it anywhere. Actually, you can use the function inside a function, you can use a function inside a lambda, or anywhere else also if it is what. So what was the lambda function we have? So we have defined lambda, then a comma b जो हम pass करने वाले हैं, and similarly a comma b will be used in the multiplication here also, right, in for multiplication. So here 2 comma 3 का multiplication क्या होगा? 6 minus 2 plus 3 क्या होगा? 5. So the final answer will be 1, right? So you can see the final answer is 1. Okay. Then this is similar, but we just increase the complexity. ठीक है, complexity में हमने what we have added a list at the end. यहाँ पर we are just saying for I in C में, मतलब ये C एलिमेंट है, इसको बस एक एक जब भी लिस्ट आएगा, you need to always make sure कि this is can these elements can be accessible using for loop. Okay, using for loop. So when we were learning list somewhere here, so go through this whenever I have explained you how to access elements from the list. So उसमें I have very first method given is access the elements from the list via for loop. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ही करते हैं for I in C. मल्टीप्लाई कर दो ये सारा जो भी रहेगा इसको I से, ठीक है. तो इनका आंसर क्या आ रहा था? 1. तो ये बस मल्टीप्लाई होगा 1 into 1, 1 into 2, 1 into 3, right, and 1 into 4. And this is how we will get the our output as 1 2 3 4, 1 2 3 4. You can see like this. Try to understand this, go into a granular level. ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा समझ पाओगे. Then another example that we have taken was related to args. ठीक है, so we have seen positional. ठीक है, positional में क्या होता है? लैम्डा होता है, फिर a comma b रहेगा. ठीक है, then we have seen what we have seen
डिफॉल्ट जिसमें ए भी रहेगा और यहाँ पर कुछ वैल्यू हम असाइन कर देंगे, सो दिस बिकम्स अ डिफॉल्ट एंड देन वी हैव सीन दिस आर्ग्स। आर्ग्स क्यों लेते हैं हम? जब व्हेन वी डोंट नो हाउ मेनी वेरिएबल्स वी आर गोइंग टू पास, तो जो भी वेरिएबल्स हम यहाँ पर पास कर रहे हैं, वी डोंट नो हाउ मेनी दीज आर, राइट? दीज कैन बी लाइक मल्टीपल, so when you don't know how many variables you are going to pass, you use args, ठीक है? So here also you can also write this as like this, ठीक है? जिसमें args का value you can add multiple multiple parameters here, and these will get checked against this expression, ठीक है? Whatever expression you write, यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर कुछ अलग है, ठीक है? So in this expression we are just finding a square. Here we are just checking whether the elements are even or not, right? Even or not. Then we have seen for keyword arguments. So keyword arguments are similar to args. ठीक है? Args के similar होता है. Like you don't know how many, like कितना ज़्यादा parameters you will add. ठीक है? But it is related to default. Default क्यों? क्योंकि default में हम values कुछ इस तरीके से लिखते हैं. Key value pair. ठीक है? Key value pair. So the A becomes key, B becomes A, this becomes value. So here you can see these are passed as key value pairs. So whenever you pass key value pairs, you must use keyword arcs. Okay. And whenever you use keyword arcs, you also need to mention, you have to say keyword arcs dot values, because it will just take these values only, not the keys. Yeah, it will just take the values. And then you just said key for I in keyword args dot values यानी this 10 20 30 40 या 40 9, and just give their square, so you got the squares. Yeah, like this. So these things that we have seen till now. Okay, so now your job is to practice it more and more and more, like बहुत ही ज़्यादा, and then you'll try to understand. So जिसको नहीं समझ में आ रहा है, you can like, इसको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है. You just have to be with it. Like you जो आपको बस बने रहना है, बने रहना है. बने मतलब वो महाराष्ट्र हास्य जत्रा वाला बना नहीं, बने नहीं. You just have to be there. Stay there for a longer time. ये अगर समझ में भी नहीं आता है, तो भी like इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना. जो जो चीजें आपके हाथ में है, जैसे छोटी छोटी चीजें like this. So this code, you at least know this, right? X equals to, इसको lambda डिफाइन करा, यहाँ पर पैरामीटर्स ऐड करे हैं, कोलन डाला है, देन you have added these expression and you are just calling this x1 by adding a 5. ठीक है? If you only understood this कि this 5 will go here, then it will find 5 का square, that is 25, right? And you will get our answer as 25. If you only understood this also, then also fine. This is also a win for you. ठीक है? This is also a win for me. ठीक है? So don't worry about this. But if you like stressed out होकर छोड़ना नहीं, like you have to continue this. Practice the other sessions that you are getting. ठीक है? So eventually when you will practice these, so I will release the assignments today, and eventually when you will practice this, अरे ये भी है, यहाँ पर बैठो, यहाँ पर बैठना नहीं, बैठो. Then you just need to practice these. Okay, you just need to practice this. So let's learn higher order function. Okay, higher order. So this is another uh, function of lambda. ठीक है, lambda ही है ये. lambda ही सीखेंगे, बस थोड़ा एक और लेवल हाई करने वाले हैं हम lambda सीखने में. ठीक है. So this is like one function is passed as a parameter to another function. ठीक है, to another function. So what does this mean? ठीक है, we'll try to understand everything. ठीक है, a function which is passed as parameter to another function. तो मतलब कुछ तो समझ में आ रहा है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के लिए एज ए पैरामीटर पास करने जा रहे हैं.
राइट। सो हमें ये तो पता है, ठीक है। वी ऑल नो दिस कि लैम्डा कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, लैम्डा देन सम पैरामीटर्स कोलन सम एक्सप्रेशन, वी कैन बी कॉल लाइक दिस। So there are some functions which are called as like this examples like map. Map function एक है, filter है, ठीक है। इनको सीखते if there are more we will try to cover it, ठीक है। So the very first function is map and filter, ठीक है। So ये functions हम on top of lambda चलाएंगे, ठीक है। On top of lambda माने ये लैम्डा हो गया तुम्हारा, सॉरी ये लैम्डा हो गया, इसके ऊपर हम मैप लगाएंगे या फिल्टर लगाएंगे, ठीक है। तो लेट मी जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। सो फर्स्ट ये एक इटरेबल पे चलता है। व्हाट इज इटरेबल? इटरेबल कैन बी अ लिस्ट, कैन बी अ टपल, कैन बी अ स्ट्रिंग। सो लेट्स टेक अ लिस्ट, ठीक है। इज इक्वल्स टू लिस्ट वन इज इक्वल्स टू लेट्स टेक जनवरी, जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, नहीं, ठीक है, इतना ही लिखते हैं, ज्यादा नहीं लिखते बेटे, ठीक है। सो दिस इज योर इटरेबल, ठीक है। दिस इज योर इटरेबल, दिस इज अ लिस्ट ऑफ मंथ्स, जनवरी टू मे। देन then you write something like this. You either take a tuple or you take a list. Inside this you say map, okay, inside this you say map and you say lambda, okay, lambda. uh, for example, you just want to check whether the it is a length or what's the length, ठीक है। So you just said कि कोई variable ले लिया x equals to and then you said कि उसका लेंथ रहना चाहिए somewhere around 3, ठीक है, 3 रहना चाहिए। and then you give a comma and you say list one, किसका रहना चाहिए? list one का। So what I have written here, so initially you if you see this is my lambda function, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक। this is my lambda function, ठीक है। this is my lambda function। So if I add this lambda function into a x variable and if I query with something, some text, right? So like this, right? January, for January. So what will happen here basically? What will happen? It will check this entire text. यहाँ पर जाएगा this, यहाँ पर check करेगा if the length of this Jan is 3 or not. Okay. If it is 3, it will return true, right? If it is 3, it will return. So what I have added on top of this or on top of this, I have just added a first I have added this list as an input. So ये input की तरह काम करेगा like this, and I have added this map function. ठीक है, map function उसके आगे। So map function will do what? It will map this lambda. Map का नाम ही समझ रहे हो, like mapping means it will map, ठीक है। So map क्या करेगा? ये lambda है, ठीक है। इस lambda को दिस ये जो लिस्ट है इससे मैप करेगा, ठीक है। ये जो लिस्ट है इससे मैप करेगा, उसमें क्या है? जान है, फेब है ना, मार्च है। तो ये यहाँ पर ऐसे इसको असाइन करेगा लाइक दिस, किसको? लिस्ट को, ठीक है, इसको लिस्ट को। तो यू आर इनिशियली सेंडिंग लाइक दिस, ठीक है, सेंडिंग लाइक दिस। नाउ यू जस्ट सी इफ द मैप विल डू दैट, ठीक है, मैप विल डू दैट। सो इफ यू सिंपली सी मैप तुम्हारा एक्सप्रेशन एंड देन इफ यू ऐड वॉट एवर द इटरेबल, इसको इटरेबल कहेंगे, ठीक है, दिस इटरेबल। So here what will happen, it will check each and every elements from this particular list for this condition, ठीक है। तो फर्स्ट रहेगा it will check for Jan, ठीक है, Jan का लेंथ 3 है क्या? तो we will get true। फिर फरवरी का चेक करेगा, we will get true। फिर मार्च का तो 3 से ज्यादा है, राइट, 1 2 3 4 5।
So we have got false, ये भी 1 2 3 है, we got true, ये भी 1 2 3 है, we got true. ठीक है. So this is what the map function will do. इतना ही काम है इसका. ठीक है, इतना ही काम है इसका मैप फंक्शन का. It will just map your lambda function to a list. ठीक है, it will just map your lambda function to a list. अभी यहाँ पर और एक फंक्शन है फिल्टर. यहाँ पर और एक फंक्शन है फिल्टर. तो क्या फिल्टर फिल्टर क्या करता है वो देखते हैं. ठीक है, सो आई विल जस्ट पिक दिस वन एग्जैक्टली. इंस्टेड ऑफ मैप आई विल जस्ट ड्रॉप ए फिल्टर हियर. ठीक है, आई विल जस्ट ड्रॉप ए फिल्टर. सो अभी इफ यू सी ये दोनों का भी वर्किंग सेम है. ये भी ऐसे ही लिखा है मैंने. टपल, ये टपल लिख लो या पे लिस्ट लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, इट डजंट मैटर. और इफ यू डोंट इवन राइट दैट इज ऑल्सो. सो आई हैव रिटन मैप हियर फिल्टर. ठीक है, फिर द लैम्डा इज सेम कि ये चेक कर रहा है वट एवर द लिस्ट, ऊपर जो मैंने दी थी लिस्ट, उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है उनका लेंथ 3 है या नहीं है. ठीक है, इट इज जस्ट गिविंग मी ट्रू एंड फॉल्स. ठीक है, बट द फिल्टर विल गिव मी एक्चुअल वैल्यूज. एक्चुअल वैल्यूज. लेट मी जस्ट रन दिस. If I run this, I will get January, February, April, May. So जिनका जिनका लेंथ 3 है वो वैल्यूज आएगी. So this is the difference between map and filter. What is the difference? So let's write. ठीक है. So let's write the differences. ठीक है. Let's write the differences. So the very first thing is map. ठीक है. Map का syntax कैसे है? You just write फंक्शन, राइट, और फंक्शन नेम. ठीक है, जिसमें हमने लैम्बडा लिखा है, पूरा कोड लिखा है. एंड देन यू राइट इटरेबल. ठीक है, इटरेबल क्या रहता है? लिस्ट रहेगा या फिर यू जस्ट गो थ्रू अ टपल और व्हाटएवर. ठीक है. फिल्टर का कैसे रहेगा? फिल्टर का भी सेम रहेगा. फिल्टर का भी सेम है, राइट. यू जस्ट राइट अ फंक्शन नेम और फंक्शन एंड देन यू go for iterable, right? Iterable. So this is same for map and filter. But now map and filter both can work on condition. But both can work on condition means ये condition दिया, right? So this is a condition कि length of x is 3. Length of x is 3. But only map works on operations. Filter does not. Okay. What does this mean? ये मैप ही वर्क कर पा रहा है. मैप एज इन मैप वर्क करता है इसके ऊपर. फिल्टर जस्ट ये वैल्यूज देता है. ठीक है, लेट मी जस्ट राइट सम मोर डेटा. इफ इट इज a condition, then map will return true or false. ठीक है, map will return true instead for you should say and. Map will return true and false. ठीक है, while filter will return the actual the actual वैल्यूज. ठीक है, द एक्चुअल वैल्यू. ठीक है, इतना समझ में आ गया. इसको छोड़ दो. ठीक है, इसको छोड़ दो. हमें लाइक दीज आर नोट फॉर. ठीक है, फॉर मैप एंड फिल्टर. ठीक है, फॉर मैप एंड फिल्टर. व्हाट इज मैप? मैप में भी लिस्ट जाएगा, इटरेबल जाएगा. फिल्टर में भी लिस्ट जाएगा, इटरेबल जाएगा. एंड देन व्हाट विल हैपन इज you will get uh, these values. Like ये map check करेगा, true and false देगा. But filter also it will check. It will give us a actual values. ठीक है, filter will give us a actual values. जो ये condition check करेगी. ठीक है. So let me just give you one more example.
Mm, and then I will. So if you understood those, then we will try to check. Okay. So instead of tuple, you can write anything. Okay. So let me just write a list of map of. ठीक है इतना लिख दिया उसके बाद you just have to write a lambda function. Lambda of में x मैंने यूज करा है and I am saying x का स्क्वायर दे दो. ठीक है x का स्क्वायर दे दो किस में से एक लिस्ट में से. तो लिस्ट कैन वी कैन आल्सो राइट लिस्ट हियर. ठीक है हम इनिशियली क्या कर रहे थे दिस लिस्ट ये जो लिस्ट है हम इसको बाहर लिख रहे थे लाइक इसको हम ऐसे बाहर लिख रहे थे लिस्ट टू इज इक्वल्स टू लाइक दिस एंड लिस्ट टू को यहाँ पर लिख रहे थे लाइक दिस लिस्ट टू. So this both way are set. You either define a list outside or you directly take this list and paste it here. Okay, paste it here. So what will happen? Map will. Okay. So map will right now it will do the operation. Okay. मैप क्या करेगा ये ऑपरेशन करेगा. अभी दो चीजें है गाइस. ठीक है यहाँ पर हमने कंडीशन दी थी फॉर चेक. चेक में ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है और यहाँ पर क्या करता है ये फिल्टर पे ऑलवेज एक्चुअल वैल्यूज ही देता है. अगर मैप को दिस इज न्यू लर्निंग. ठीक है दिस इज न्यू लर्निंग. अगर मैप को कोई काम करने बोले. ठीक है यहाँ पर काम करना है राइट. यहाँ पर क्या करना है बस चेक करना है. इक्वल्स टू क्या होता है यू हैव टू चेक वेदर द लेंथ ऑफ एक्स इज 3 और नॉट. यस और नो ट्रू और फॉल्स. ठीक है तो मैप ट्रू और फॉल्स दे देता है. फिल्टर विल ऑलवेज गिव यू एक्चुअल वैल्यू. ठीक है अगेन if you if you अगर इफ यू से टू मैप कि भाई इसको कुछ काम करो तो मैप क्या करेगा हर एक चीज का स्क्वायर देगा. हर एक चीज का स्क्वायर देगा यहाँ पर. तो इफ आई run this first and then run this it will give us a square. ठीक है it will give us a square. But now let's see मैप फिल्टर क्या करेगा. ठीक है फिल्टर क्या करेगा फिल्टर 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 क्या करेगा. तो कुछ नहीं करेगा भाई. It will do nothing. Okay, it will do nothing. So that's why I have written here. क्या लिखा है map and filter can both can work on condition but only map works on the operation. Filter does not. तो जब काम करने की बारी आएगी then map will do the work. ठीक है filter काम ही नहीं करता है. You can see filter has not done anything. जैसा हमारा इनपुट था it just gave the same output. बट मैप डिड द वर्क. तो यहाँ पर समझने के लिए दो चीजें हैं. तो फर्स्ट इफ वी गिव अ कंडीशन. कंडीशन कुछ इस तरीके से लिखी जाती है इफ दिस और दैट राइट. यस और नो में जब भी आउटपुट पूछा जाएगा then map will give true and false whereas filter will give you the actual values. And when you will ask map to do the actual work कि इनका स्क्वायर करना है इन सबका स्क्वायर करना है तो मैप विल डू द स्क्वायर बट फिल्टर कुछ नहीं कर पाएगा. ठीक है फिल्टर कुछ नहीं करेगा. समझ में आ रहा है ये. आर यू गेटिंग दिस और नॉट गाइस. टाइप यस और नो. टाइप यस और नो इफ यू आर गेटिंग दिस और नॉट. ठीक है आई एम ट्राइंग टू टीच यू वेरी स्लो क्योंकि these are actually not really important concepts because most of the folks don't really use this. But we are just keeping trying to learn some more complex. Cool. Yes. So trying to learn some complex things so that जब आगे जाकर और भी कॉम्प्लेक्स चीज आएगी तो हम ज्यादा ससेप्टेबल रहेंगे चीजें सीखने के लिए. Cool. So let's continue. So if you have already said yes, तो मेरे को आपको एक एग्जाम्पल दे. एग्जाम्पल एज इन
लाइक अगर ये फिल्टर, so if I have to write something and explain you by writing it. Uh, ठीक है. So if we try to understand this, so what is happening here is, जब कभी कंडीशन दोगे, ठीक है, या फिर इफ यू ठीक है, ये मैप है, ठीक है, एंड दिस इज अ फिल्टर, ठीक है, दिस इज अ फिल्टर. ये इतना समझ में आ रहा है, राइट? तो if you see if you see, if you ask टू, दो चीजें यू कैन आस्क. फर्स्ट इज कंडीशन, ठीक है. कंडीशन में क्या होगा, यू विल आस्क फॉर आई इज इक्वल्स टू है ना, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट? वेदर लाइक फॉर आई, फॉर आई इन लिस्ट, लाइक दिस कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन. इसमें ये क्या देगा आपको, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स. बट फिल्टर क्या देगा, कंडीशन में फिल्टर विल गिव यू एक्चुअल वैल्यूज, ठीक है, एक्चुअल वैल्यूज. फिल्टर विल गिव यू एक्चुअल वैल्यूज. सेकंड क्या रहेगा, एक्चुअल वर्क, ऑपरेशन. ऑपरेशन ऑपरेशन कैसे रहता है, यू कैन से आई आई टू द पावर टू, है ना, स्क्वायर निकालो, स्क्वायर निकालो. और क्या रह सकता है, एडिशन कर दो, है ना. एडिशन कैसी रहेगी, ए प्लस ए, अरे यार ये तो इंट हो गया, ए प्लस बी, है ना, ऐसी चीजें करो. इट व्हाट इट विल डू, मैप विल डू द ऑपरेशन. बट यहाँ पर इसको पकड़ लो, इट डज नॉट वर्क, ये काम ही नहीं करता है, ठीक है. दिस डज नॉट वर्क, डज नॉट वर्क, ठीक है, दिस डज नॉट वर्क. So this is how, this is what the total filter and map is. Okay, guys, this is what the total filter and map is. अच्छा, अच्छा, अच्छा. और हम यहाँ पे थे, ठीक है. This is what the total filter and map do. So now if we understood this, इसको अगर मैं इसी को, ठीक है, इसी को मैं एक कंडीशन में चेंज कर देता हूँ, ठीक है. If I can change this into a condition, let's say if you see the square of x is equals to 4, ठीक है, square of x is equals to 4, मतलब what I have said here कि जो x का स्क्वायर रहेगा, मतलब x का मतलब 2 का स्क्वायर, 4 3 का स्क्वायर, अगर ये 4 रहेगा तो वो एलिमेंट मुझे दे दो. x में जो भी इसका स्क्वायर 4 रहेगा, किसी का भी स्क्वायर 4 रहेगा, जैसे ये दिख रहा है मुझे, ठीक है, जैसे ये दिख रहा है, या फिर 2 है, लाइक 2 का स्क्वायर 4 है, राइट, 2 का स्क्वायर 4 है, ये नहीं, 2 का स्क्वायर 4 है, राइट. सो जिस भी एलिमेंट का स्क्वायर 4 रहेगा वो एलिमेंट दे दो. सो यहाँ पर आई हैव गिवन अ कंडीशन, यहाँ पर मैंने ऑपरेशन दिया है कि स्क्वायर करो. यहाँ पर मैं स्क्वायर करो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि जिसका स्क्वायर 4 है वो एलिमेंट दो. तो फिल्टर क्या करेगा, वो एलिमेंट फिल्टर आउट करेगा. यू कैन सी द एलिमेंट, इट जस्ट फिल्टर्ड आउट, ठीक है, इट जस्ट फिल्टर्ड आउट. So similarly, you can run the filter for example, getting filter क्या है, like नाम से ही कह रहा है कि ये filter out करके देता है element. It just give you the elements by doing the filtering out. ठीक है, by doing the filtering out. ठीक है. Then let's understand. एक और एग्जांपल देता हूँ for filter only. ठीक है, filter only.
So let's say a list of again filter. Yeah, filter. इसके अंदर आई एम राइटिंग lambda एंड फिल्टर जब भी यूज करूंगा आई नीड टू गिव अ कंडीशन. ठीक है, कंडीशन पे फिल्टर काम करेगा, राइट. इफ आई से x ampersand 2, x ampersand 2 is equals to 0. इट मीन्स इसका क्या मीनिंग है, हमें पता है कि अगर ये कंडीशन 0 आएगी तो वो चीजें जो भी रहेगी दोज विल बी क्या रहेगी, इवन वैल्यूज रहेगी, राइट. इवन वैल्यूज. तो हम एक लिस्ट पास कर देते हैं इसके अंदर 1 2 3 4 5 6. ठीक है. तो व्हाट विल हैपन हियर नाउ. तो ये चेक करेगा जो भी एलिमेंट्स है यहाँ पर, whatever the elements we have 1 2 3, each element चेक करेगा इस कंडीशन के अगेंस्ट कि इनका एम्परसेंट जीरो रहेगा, 1 का जीरो रहेगा कि नहीं, 1 रहेगा, 2 का जीरो रहेगा, 3 का 1 रहेगा, 4 का जीरो रहेगा, 1 रहेगा, 0 रहेगा. ठीक है. तो जो भी जीरो रहेगा वो एलिमेंट्स ये फिल्टर आउट करके देगा. इट विल गिव अस अ फिल्टर आउट. यू कैन सी 2 4 6. ठीक है, 2 4 6. सिमिलरली ये हो गया इवन नंबर के लिए. अगर मुझे ऑड नंबर के लिए चाहिए रहेगा तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली से इक्वल्स टू की जगह नॉट इक्वल्स टू. ये नॉट इक्वल्स टू का सिंबल है. ठीक है. तो इट विल गिव मी अ ऑड नंबर ओनली 1 3 5, राइट. और अगर यही चीज अगर मैं मैप पे चलाऊं तो मैप विल गिव मी ट्रू एंड फॉल्स, राइट. मैप विल गिव मी ट्रू एंड फॉल्स. ठीक. ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. So this is the simple example of map and right filter. ठीक है. So let me just give you one example. ठीक है. So here is the example. तो इसमें मैंने क्या करा है, एक लिस्ट वन ली है. ठीक है. लिस्ट वन में आई हैव एडेड संडे मंडे टू सैटरडे. ठीक है. डेज आई हैव एडेड. तो आई एम सेइंग मैप कर दो x डॉट x इज टाइटल. ठीक है. इज टाइटल कर दो. ठीक है. तो व्हाट शुड बी द आउटपुट गाइस. इज टाइटल बोला है मैंने. ठीक है. व्हाट शुड बी द आउटपुट. ट्राई टू डू इट लाइक इज टाइटल. मतलब ये टाइटल करता है, हर एक टाइटल हमने सीखा था. हाँ. तो टाइटल क्या करेगा, जो भी फर्स्ट एलिमेंट रहेगा उसको उसको टाइटल कर देगा. ठीक है. तो व्हाट शुड बी द आउटपुट हियर गाइस. ठीक है. तो मैप क्या क्या करता है हमने सीखा है. क्या क्या करेगा मैप. मैप विल डू, ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. मैप विल डू, ये इस चीज समझ लो. मैप क्या करेगा, कंडीशन अगर देता है तो ट्रू एंड फॉल्स देगा, और अगर ऑपरेशन देते तो एक्चुअल जॉब कर लेगा. भाई फिल्टर क्या करेगा, इट विल जस्ट गिव यू, इट विल जस्ट, चल ही नहीं रहा है guys. तो मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ फुल स्क्रीन से बाहर. एनीवेज ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम जो मैंने कमेंट में डाला है. ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. क्या है प्रॉब्लम, दिस वन. ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ओके, समवन, एनीवन गेटिंग दिस. क्या कर रहे हैं हम, ये एज अ लिस्ट पास कर रहे हैं यहाँ पर. एंड वी आर जस्ट सेइंग मैप कर दो x ऑफ इज टाइटल. इज टाइटल, x ऑफ इज टाइटल. तो इज टाइटल क्या है, सबसे पहले इज जब भी रहेगा इट इज लाइक इज टाइटल, ये टाइटल है या नहीं. ठीक है. दिस विल जस्ट चेक इज टाइटल और नॉट. इज मतलब ये टाइटल है या नहीं. तो संडे टाइटल है, टाइटल है नहीं, फर्स्ट जो वर्ड है वो टाइटल. ठीक है. मंडे टाइटल है, टी टाइटल है, डब्ल्यू वेंसडे टाइटल है, ये नहीं है, ये भी नहीं है. दिस इज ऑल्सो टाइटल.
So basically it should return true for true false false ट्रू। ठीक है, कुछ इस तरीके से इट शुड रिटर्न, बिकॉज जब मैप काम करेगा तब ये कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, तब ये कंडीशन चेक करेगा। सिमिलरली इफ आई डू द सेम फॉर फिल्टर, इसी को मैं फिल्टर अगर करवाऊँ, इसको मैं फिल्टर फिल्टर अगर करवाऊँ, तो व्हाट इट विल डू, जो भी इज टाइटल है वही वाले एलिमेंट्स ये मुझे दे देगा आंसर में। तो थर्सडे एंड फ्राइडे छोड़ के ये सारी चीजें इसने दे देनी चाहिए। ठीक है, इज टाइटल क्या रहेगा, ये चेक करेगा, दिस आर कंडीशन चेकर। ठीक है, जिसका भी आउटपुट ट्रू एंड फॉल्स रहेगा उसमें मैप विल गिव ट्रू एंड फॉल्स, रेस्ट फिल्टर विल फिल्टर आउट दोज एलिमेंट। ठीक है, एंड और एक एग्जांपल देता हूँ अभी। और एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल क्रिएट करते हैं। लेट्स से लिस्ट ऑफ मैप ऑफ लैम्डा। ठीक है, उसमें मैंने कहा ए इज इक्वल्स टू ए प्लस टू। ठीक है, A+2, और यहाँ पर आई एम पासिंग लिस्ट 2। ठीक है, लिस्ट टू हमने डिफाइन नहीं करा है, सो हम लिस्ट टू डिफाइन करते हैं, LST2। ठीक है, लिस्ट टू क्या रहेगा, ये रहेगा 2,3,5। ठीक है, सिंपल है LST2। एंड अभी हमने इसको, इसका क्या आउटपुट आना चाहिए, what should be the output of this code? Okay, what should be the output of this code? Okay, someone just answered the previous question. The answer, that is true, false, true. That is right, true, false, true. That is also right. So here second question का आंसर दिया है सुहास ने 457। 457, दैट इज ऑल्सो राइट, क्योंकि मैप विल डू द ऑपरेशन, राइट। मैप क्या करेगा, हर एक वैल्यू लेगा एंड इट विल जस्ट ऐड 2 इन इट। ठीक है, सो इफ आई रन दिस we should get 457, right? Similarly filter क्या करेगा, let's try to check। okay? Similarly filter क्या करेगा, filter क्या करेगा बता दो guys, what filter will do in it, filter क्या करेगा इसके अंदर। filter क्या करेगा, what filter will do, so here we have seen, yes, 235, that is right, because filter will do nothing, राइट। फिल्टर को काम करने, दिस इज आलसी, ये आलसी, ये इसको बस फिल्टर आउट करने बताओ। ठीक है, एक्चुअल काम मैप ही करेगा। ठीक है, फिल्टर सिर्फ फिल्टर आउट करेगा। ठीक है, सो दैट इज फॉर टुडे, लाइक इट इज अबाउट टाइम, हमें और बस 5 मिनट्स बाकी है फॉर टुडेज क्लास। सो व्हाट वी हैव लर्न, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ अ कंक्लूजन फॉर लैम्डा आल्सो। ठीक है, लैम्डा आल्सो, तो लैम्डा हमने 3 days में दिस इज डन। दिस इज डन, तो टुमारो हम oops सीखेंगे, या फिर वी विल गो फॉर सम ट्राई एंड एक्सेप्ट के अंदर और भी है टाइम सीरीज। टाइम सीरीज टाइम सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्राई टू लर्न। टाइम सीरीज के लिए 2 दिन जाएगी गाइस। ठीक है, 2 days, 2 days। Yes, I am trying to cover most of the important libraries here. So अभी क्या होगा कि कुछ और libraries भी we will probably skip,
क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा पाइथन है, बट इफ यू डोंट, इफ यू हैव सम क्वेश्चन, इफ यू फाइंड सम लाइब्रेरीज इंपॉर्टेंट, so you can contact, we can learn, ठीक है। तो इतना जो जो सिलेबस में है वो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर, जो जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू में या करियर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आई एम जस्ट कवरिंग दिस, ठीक है। तो लैम्डा इज डन। तो लैम्डा में हमने क्या क्या सीखा, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि इट इज लाइक इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, which function is an anonymous function, you have to say lambda function, it will ask you why. So then you have to say it is without a name, that is why it is a lambda function. We defined it as a lambda keyword and it does not require return or yield, right? It as similar to what we do in while defining a function. ठीक है, define function में क्या आता है, नाम define करना होता है, you need to use yield, right? तो ये दो चीजें अगर छोड़ दे, yield and defining a function, lambda is similar, okay? ये पैरामीटर्स यूज करते हैं, दिस एक्सप्रेशन यूज करते हैं, सी पैरामीटर यूज एक्सप्रेशन यूज। सो दिस इज द सिंटेक्स, सबसे पहले लैम्डा लिखना है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स कैन बी पोजिशनल, कैन बी डिफॉल्ट, कैन बी आर्बिट्री, कैन बी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, राइट। तो सारे के सारे एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी ले लिए। देन यू हैव टू जस्ट मेंशन एक्सप्रेशन हियर, राइट, जस्ट एक्सप्रेशन एंड इट विल डू द रेस्ट ऑफ द जॉब, यू कैन सी, राइट। सो इसका रिवीजन ऑलरेडी क्लास के स्टार्टिंग में हो चुका है। If someone wants to go again, then you can check out the video again. So I will drop the recordings in the group. ठीक है। Then we have seen these two function, map and filter, जिनको कहा जाता है higher order function. Why higher order function? क्योंकि these functions are passed as a parameter to another function. ठीक है, मतलब एक lambda नाम से ऑलरेडी फंक्शन है, उसके अंदर उसके अंदर या बाहर दिस दिस इज पास्ट, ठीक है, मैप ऑफ लैम्डा, मैप और फिल्टर ऑफ, है ना, फिल्टर ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो दिस फंक्शंस आर, दैट इज व्हाई कॉल्ड एज हाई ऑर्डर, ठीक है। समटाइम्स दिस आल्सो बिकम्स अ क्वेश्चन, बट हाई ऑर्डर में सिर्फ ये दो चीजें आती है, ठीक है। तो हमने इनका वर्किंग देखा है, दोनों का भी सिंटैक्स सेम है, फंक्शन देन यू जस्ट ऐड अ लैम्डा का पूरा स्टेटमेंट हियर, and then iterable क्या होता है, the object on which you want to iterate it, ठीक है, iterate it as list becomes an object, here you can add a tuple also, ठीक है, all those things। Then what you have said कि ये lambda function दे दिया आपने पूरा, ठीक है। then यहाँ पर बस वो iterable this list added, and at the bottom, at the outer layer you just said map or filter, map will give you true and false, filter will filter out those things, whenever you give a condition, map will give you true or false, whenever you give a condition to filter, it will just filter out using that filter, ठीक है, it will just filter out। एक्सेल सबने देख काम करा होगा, एक्सेल में व्हेन यू अप्लाई सम फिल्टर, वो हमें कुछ वैल्यूज मिलती है, ठीक है। सिमिलरली मैप में हम वो हमें वो वैल्यूज है या नहीं वो मिलती है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। But in the real world, if you ask map to do some operation, this is the operation, ठीक है, कि x L2 पे list 2 पे square कर दो हर एक एलिमेंट का, ठीक है, it will give you a square of each element। बट जब फिल्टर को वही काम करने को बोलोगे तो इट विल डू नॉट, इट विल से कि मैं तो फिल्टर के लिए बनाऊं भाई, मुझे फिल्टरिंग का काम बताओ, ठीक है, इट विल नॉट फिल्टर इट आउट, ठीक है। सिमिलरली व्हेन यू गिव अ कंडीशन टू फिल्टर, कि सेम कंडीशन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर ही निकालो, लेकिन जिसका वैल्यू 4 आएगा, ऐसा कोई एलिमेंट जिसका वैल्यू 4 आएगा, सो इट जस्ट गेव यू अ वैल्यू एज अ 2, राइट, क्योंकि 2 का वैल्यू 2 का वैल्यू विल कम एज 4, राइट। सो दैट्स हाउ यू गेट इट, ठीक है। कुछ इस तरीके से फिल्टर काम करेगा। Then we have also seen one more example जिसमें we check even and odd, right? जब भी even and odd रहेगा, then filter will give you the actual values, map will give you true and false, okay, map will give you true and false। So this is all about it, guys, okay। So it is all about, if you have understood
If you have any questions, type your questions, guys. If you have any छोटा सा भी क्वेश्चन कि अरे ऐसे क्यों, हम्म, ऐसा क्यों नहीं, why this, why this not. If you have questions, type questions or let me know. Otherwise, if you have got everything, देवी जी खड़े हो जाइए. If you have got everything, then type win in the comments, guys. Type win in the comments. As in आपको सब समझ में आ गया है उस तरीके से. Type win in the comments, guys. Okay, cool. Win, 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 win. All right, then. See you tomorrow with new topics and try to practice, guys. Practice करो. Practice से ही होगा, guys. All this, go through all these things. Go through the assignments. Practice, guys. ठीक है. So bye bye.